that you all are research scholar. So and I think we have a very few number of scholars here, right? Maybe because it is a PhD class in our university, also in PhD classes, we have either 7, 8, 10, 12, 15, depending on the batch. So I hope we are 10 or 12 people here. So we will have a very short, brief intro, as you know, we have to have 4-5 lectures together. So let's have a brief intro and then we will move forward. So let's start with Sham Yadav ji. Are you a student? Sham Yadav ji, are you a student? Okay. Neha Dubey ji. Neha Dubey. नेहा से जो लोग अपना कैम ऑन कर सकते हैं, प्लीज कैम ऑन कर ले, मैम से पहले कनेक्ट हो ले. Yeah, that will be better, you know, because you all are PhD students. You don't have to go for bookish knowledge. You have to get something extra. Okay, good afternoon, ma'am. Yes, please just give a brief intro of yours, Neha. Yes, ma'am. My name is Neha Singh. I'm a PhD scholar, and right now I'm a student only. You are pursuing PhD in economics? Yes, ma'am. I'm pursuing PhD in economics, and I cleared NET exam also in economics. Very good. Very good. Also, I'm giving a competitive exam like a PhD. I have given it, and I have given interview of PhD also recently. Okay, very good. Mr. Ram Singh. Mr. Ram Singh. Anyone else who would like to introduce himself or herself? Good afternoon, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, okay. First, let us have intro of Ram, and then we will go to Sameer. Okay. Good afternoon, ma'am. My name is Ram Singh. I completed for MA from BHU University, Maharaj, and now pursuing as a pre-PhD work in CSJMU Kanpur. Okay. Very good. Okay, and Sameer, would you mind like giving your small intro? मैम, मैं समीर कुमार गुप्ता और मैं फैकल्टी हूँ मैम, भारतीय महाविद्यालय फर्रुखाबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इकोनॉमिक्स का. वेरी गुड. और मैंने मेरी पीजी मैम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 2001 की है इकोनॉमिक्स में. वेरी गुड. और मैं इसके पहले इंटर कॉलेज में लेक्चरर भी रहा 10 साल, और इस समय मैं भारतीय महाविद्यालय फर्रुखाबाद में हूँ मैम. Very good. So I think all of you, those who wanted to give their intro, have given the intro. Now let me give my brief introduction. I am, I did my MSc from Kanpur University, and for that reason, I have a great affiliation. I did my PSc and MSc from Kanpur. So a great affinity towards Kanpur University. That time it was called Kanpur University. Okay. And that also way back, in 90 and 92. Then I completed my PhD from Utkal University, Bhubaneswar in statistics, availing CSIR SRF. I have availed CSIR fellowship for my PhD. As you know, that statistics is part of mathematics and from mathematical sciences. Since my area of research was econometrics, that is, I did some model building, so I did MA economics also. And from that time, I am working in economics as well along with the statistics. So I was teaching econometrics at Utkal University, Bhubaneswar in the Department of Statistics as well in the Department of Economics. From Utkal University, I went to Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai, working as a project scientist. From Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai, I came to Allahabad and completed my PhD, as well as my daughter was born, and I was on a leave for a year, and then I joined in Indian Agriculture Research Institute, New Delhi, as a project scientist.
Then I joined Institute of Applied Statistics and Development Studies at Lucknow in 2003. In 2005, I joined World Bank as an economist in water sector projects. For 5 years, I was working as an economist in water sector at Lucknow as World Bank. And in 2010, I joined as a full-fledged professor of management in Amity University. Presently, I am heading statistics, operation management, IT, and economics at Amity University. And in that, with this my brief background, I have, 6 of my PhD scholars have been awarded PhD in various, varied dimensions like financial inclusion. Then these a student has done supply chain management of small and medium handicraft uh, entrepreneurs. Then we had productivity analysis of CSIR system in India. That was my first PhD scholar work. Then I have a defense HAL student who worked on transfer of technology project of defense avionics sector. Apart from that, I had big data analysis, PhD in cellular attrition. That was the work of big data. Then financial inclusion. Then this the DOSI work. And then lastly, I am my student who has submitted has worked on risk quality of life of cancer patient, and then online buying behavior. So there has been various type of scholars working under me. Presently also I have 8 scholars under me. I am coordinating research methodology and statistics courses for MIT University for PhD also. So in that light, I am going to give you a brief of the topic assigned to me, that is unit 4. And I'm not going to teach you from book. That is one big thing, because you all are scholars now. You are not no more students. You have completed your formal education like MSc, और अब आप कदम रख रहे हैं उस दुनिया में जहां you have to be a scholar. You can be part of me also. That is, you can take my class also. So there is a difference between a scholar and a student. So I'll treat you not no longer as a student, but rather as a scholar. So whatever dimension of economic reforms I'll talk about, it will be a research. Every slide will give you some or the other researchable issue. With that, I am going to share with you. I have to share my slide, Okay. Can you see the slides? Are the slides visible to you all? Yes, ma'am. Properly Properly? Yes, ma'am. visible. Very good. So I'm starting with this brief background. I'm also president of Association of Socio-Economic Development Studies. I'm president of that association. So any one of you would like to join, Sharadji is member, so he can help you. Now the topic assigned to me today is India's economic reform, consequence for domestic and external sector. So first I will talk about India's reform, and then we will go to domestic and external reforms. Now, India's economic status. If I talk about India's economic status, you can easily tell me that India is a middle income, developing mixed economy. Now, my question here is, why still India is a developing mixed economy? Why it is not a developed economy? Even if we are having 54% of contribution of GDP from service sector, still we are developing economy, not the developed economy. Can anyone give me the answer to this particular question? Ma'am, am I audible to you? Yes, please tell me. Ma'am, because the large portion of our population is depend on agriculture, which is and the agriculture का share है GDP में, that is only 14%. So we can say that our economy is still developing.
Anything else anyone would like to say? See, each line contains lot of researchable queries, and that is what research is. Anyone else can give me some more valid answer? A very small question asked by me: why India is still developing economy? Okay. Uh, India is still a developing economy because economic reforms or economic development has phases. If you see from past, then it is from agriculture you move to industry, and from industry you move to service sector. In European nations or in America, everywhere you have seen that from agriculture they have gone to industrial revolution, and from industrial revolution they have come to service revolution. But in India, suddenly in 1980, when Rajiv Gandhi brought in computer reforms, India suddenly became a silicon hub. We had lot of emphasis on that sector, and India emerged out as a winner, and we immediately moved from agriculture, though there at that time we were slowly moving together with agriculture and industry towards service, but there was a sudden jump from agriculture to service sector, and we missed the most important part of development, that was industrial revolution. And that is the reason why Modi government, when came in picture, talked about make in India, startup India, and other type of things, so that it want to make India self-sufficient, because they know that India can never be developed until and unless we have industrial revolution. And that is the reason we have to have our policy in which we have to come up with heavy infrastructural projects. So that is the reason that India is still a middle income, developing mixed economy. It's an emerging economy. It is world sixth largest economy by nominal GDP, because you all are economics student. I'm not going to give these terms. And the third largest by PPP, that is purchasing power parity. According to IMF, that is Indian Monetary Fund, on a per capita income basis, India ranked 145th. C. Now, India ranked 145th by GDP nominal and 122nd by GDP PPP. That is just because we have more population, so PPP has increased. And even if you talk about the median income of the country, per capita average income, which is generally calculated as a median income, that is quite high. But if you see the scenario otherwise, because we have a lot of people living, more than 50% of the people are living below $3 a day. So that is under moderate poverty. I'll not say under extreme poverty, but yes, under moderate poverty. So a country in which 50% of the population living under moderate poverty, economics is a big concern. Now, government attitude since independence. When we talk of reforms, we have to check the government movement also, the political clock of the country. Pre-independence, we had a very different scenario. Post-independence, we were nationalist, more nationalist, and we had policies which were very protective. People wanted India to be an intact, independent India, and no more invention from outside and other things. So closed border economy we were following. Since independence until 1991, successive government promoted प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी. वाई प्रोटेक्शनिस्ट? क्योंकि बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से हमने आज़ादी पाई थी, एंड वी डिडंट वांटेड टू मूव इन एनी अदर crunches. Extensive state intervention and economic regulations. हमारी economic regulations बहुत rigid थी, लाइसेंस राज था. हम एक रामराज बनाने की कल्पना करते थे, जो कि नहीं बना पाए. करप्शन बहुत हाई हो गया, and that paved the way for a number of things. The end of Cold War, this is the time when Russia was disintegrated, और इंडिया में एक्यूट बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम हो गई थी. इंडिया के पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो अपने लोन्स पे कर सके, चीजें खरीद सके. एंड दैट वाज द बिगेस्ट क्राइसिस इंडिया फेस्ड इन द हिस्ट्री. एंड apart from pandemic, I'm not going to just now quote pandemic,
Yeah, and that was the era of Congress regime, and that was the era of Manmohan Singh. As we are opposing the reforms of Prime Minister Narendra Modi, that time it was Manmohan Singh who faced all these oppositions. But yes, the real liberalization or the real reform policies in India came from 1991. Now, what is economic reform? This is the definition I have written. But can you say something beyond this? Can you say something regarding reforms? Can you tell me about economic reforms? Okay, economic reforms denote the process in which government prescribe declining role for state and expanding load for private sector. That is, you are coming up with structural reforms, and we are moving toward more market economy, capitalist economy. Reform is not the aim of economy. Actually, reform is not the aim of economy. The aim of economy is to develop. Reforming the economy is the aim. So you have to be very clear between these two lines. That is, reform is not the aim of economy, rather reforming the economy is our aim. Now, economic reforms, new economic policy was there in 1991. So if we talk of it, what was the need for it? Meaning of reform is you are setting some policies, some rules, some regulations, some governance to boost economic growth. That is a simple meaning of reform. Now, what was the need for reform? Poor performance of public sector. आज़ादी के कितने साल बाद 1947 में हम आज़ाद हुए थे और 90 तक हमारे पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस लगातार डिटोरिएट कर रही थी. बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन बहुत बुरी हो गई थी. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खाली हो गए थे. डेप्थ, गवर्नमेंट डेप्स बढ़ गई थी. ये वही डेप्स है उस समय जो ली गई थी जब इराक ईरान वॉर हुआ था और गल्फ क्राइसिस हुई थी पेट्रोल की, और उस समय जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने लोन लिए थे उसको आज हम 100 रुपए के रूप में पे कर रहे हैं, या हाई कस्टम ड्यूटी और ये सब ड्यूटीज लेके कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर पेइंग दैट 30 ईयर ऑफ लोन. सो दोज आर द थिंग्स वी हैव टू लुक फॉर. इसीलिए मैं डेप्थ इकोनॉमी quite pressurizing. Inflationary pressure, yes. Inflation to some extent is good, but inflation, very high inflation is not tolerated. Because as I told you, 50% of the population is moderately poor. Terms and condition of World Bank and IMF. If you take loan from someone, you are bounded by the terms and condition. And when we talk of nation, then we are bounded by IMF and World Bank. New economic policy, stabilization measure. That is to stabilize the economy because balance of payment, foreign other reserves were at stake. So there was a lot of need to have sustain these things. That is correcting adverse balance of payment, tackling with inflation. These were the two very, very major problems that brought India into major economic. The 1990 reforms are said to be the major economic reform in the history of India. Independent India, we can say. Structural reform measures for improve efficiency, remove trade restriction. Efficiency की बात तब से इसलिए बहुत ज्यादा आने लगी क्योंकि हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट सिक होने लग गए थे, और कहीं ना कहीं बात आ रही थी कि या तो हम पैरेलल इंस्टीट्यूशन खोलें, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन विच आर मोर एफिशिएंट, और इन्हीं यूनिट्स को कुछ कड़ाई करके एफिशिएंट बनाएं. सो अगर इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की हम बात करें तो वी कैन change it into 3 phases. That is phase 1, 1950 to 1980 आप कह सकते हैं, जिसमें 50 to 65 and 66 to 79 there were 2 phases. Then phase 2 is policy regime change, that is 80 to 1993
जिसमें हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया था 1990 का, हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया था, एंड देन पोस्ट लिबरलाइजेशन एरिया, दैट इज after 1994, because that is the time when we have seen in 2000 from one in that decade, you know, we have, when the initiation of 21st century started, we had an economic boom. The post-independence period of India was marked by economic policies which tried to make countries self-sufficient. There were two types of model, Gandhian model and Nehru model. Gandhian model was cottage industry based on self-sufficiency with promoting small units, which we are promoting these days with Startup India, Make in India, and other way. And Nehruan model was like pumping money to big industrialists. He was of the option that let us put up heavy industry and then we can have a lot of development. So both Nehruan and Gandhian model mixed together was the policies of that time. Under the economic reform, stress was given more to development of defense, infrastructure and agriculture sector. तो ये नहीं है कि चीजें आज हो रही हैं. सिंस इंडिपेंडेंस देयर वाज अ कंजर्वेटिव अप्रोच फॉर रिफॉर्म. डिफेंस को सुधारना बहुत जरूरी था क्योंकि हमने तुरंत चाइना वॉर हारा था. इंफ्रास्ट्रक्चर, यस, इंडिया वाज इन अ वेरी वेरी पुअर जंक्शन. And agriculture sector, because agriculture was the backbone of our country. It still is. 68% of our population is agrarian, contributing only 20% to our national income. So again, this is a sector which is in red. And presently also, after so many years, 75 years of independence, we are not able to boom it. Now, economic reforms during 1960s and 80s, that is green revolution. सबसे पहले हमने ग्रीन रेवोल्यूशन का काम किया, दैट इज एग्रीकल्चर यील्ड को बढ़ाया. दैट वाज द टाइम ड्यूरिंग मिसेस गांधी व्हेन यूरिया एंड अदर थिंग्स वर बिकॉज विद द इम्प्रूव्ड सीड एंड यूज ऑफ फर्टिलाइजर दैट वी हैड first green revolution, then later on we had second green revolution, but today we are in a very pathetic situation क्योंकि प्रोडक्टिविटी एकदम स्टेगनेंट हो गई है. प्रोडक्शन बढ़ रहा है बट दैट इज बिकॉज ऑफ इनपुट इंक्रीज. हमारी लैंड होल्डिंग बहुत ड्रास्टिकली कमजोर होती चली गई क्योंकि हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर अराउंड 90% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. इतनी छोटी छोटी एवरेज लैंड होल्डिंग में एक अच्छा प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी करना बहुत ही मुश्किल बात है. तो एग्रीकल्चर पे कॉर्पोरेट फार्मिंग, यू नो, जॉइंट फार्मिंग एंड इस तरह की बातें आ रही है. डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, क्योंकि यू नो फार्मिंग अलोन इज नॉट अ वेरी सस्टेनेबल बिजनेस फॉर एनी फार्मर एनी लॉन्गर. So we have to have number of policies. A very drastic change in agriculture is needed to boost the farmer out of it. And these are all researchable things which I'm telling you. So if you can take any one of the project as your researchable, project for your PhD. Then new irrigation projects were launched. Rural banks were also set up. Today also we are talking of financial inclusion, rather digital financial inclusion. And when we are talking of digital financial inclusion, we should know that our population is not digitally literate. So the first step towards liberalization of economy was taken even before liberalization, and that was the era when Prime Minister Rajiv Gandhi took his oath. That is, he brought IT revolution in the country. Restriction on various sectors were eased. He knew that you have to open the door. The 1990 की नींव तो यहीं से एक्चुअली पढ़ना शुरू हो गई थी, जो कि it goes to the credit of Manmohan Singh. He was an economist in his range. But yes, नींव शुरू हो गई थी. Control on price was removed. This was the second thing. Stress was given on increased growth rate. So growth rate बढ़ाना था. And this was the time when we had a great industrial revolution which is started in India. Today we are having 54% contributing from service sector, and service sector is largely the IT sector in India. Now the scenario pre-1991.
if we talk of pre-1991 scenario, then interventionist economic policies were there. Low level of growth was there. As I told you, everyone was protectionist and there were conservative policies. License Raj was there. Low industrial production was there. Price setting was there. Foreign trade was very restricted. And because of that, the growth was stagnant at around 3.4 or something. So it was a time that policymakers and economists thought that no, this is the time when we have to boost the country, we have to make it booming. So in 80s, the wind, we could easily saw the wind of change. That is the time when India was, Mrs. Gandhi was assassinated in 1984. Prime Minister Rajiv Gandhi took over. Inefficient management of India, because in 70s and 80s we have witnessed inefficient management of Indian economy with worst public sector performance. Revenue used to tackle social issues like poverty, unemployment, population explosion, etc. So there were lots and lots of things which were really, problem, giving problem to us. Yes, this is the time when we brought number of policies to mitigate poverty. We have Millennium Development Goals, then we had Sustainable Development Goals. Employment was rocket high. Presently, it is. So 80s was a period, 70s to 80s was a period, very pathetic period in Indian economy. Foreign exchange used for internal consumptions, crisis, and that forced us at the door of crisis of 1991, where we were standing at the door of IMF and World Bank, and we took loan. And we announced new economic policy, that is Dankal proposal. Another thing came for farming sector, and there was a huge hue and cry, and there was a lot of resistance from all the political corners. But yes, it was the boldest step of Prime Minister Manmohan Singh who paved the way. So in July 1991, India has taken a series of measures to stop. Now, this is the biggest structural change which India witnessed, and this should be studied in depth. If you're doing PhD, you should, question each and everything here, and that will give you the presence, that can link with your present scenario and your future perspectives. So the new economic policy introduced was liberalization, internal as well external, extending privatization and globalization of economy. आज तो हम इतना ज्यादा ग्लोबलाइज हो गए हैं कि डिस्टेंस डजंट मैटर. A person living in Singapore doing business in India, day and night talking to a person, and we are not talking to our next door neighbor. So that is the power of globalization today. But in 1990s, everything was new. And if you go back and visualize those things were very different. Manmohan Singh has to face lot of resistance. No power of earth can stop an idea whose time has come. इनके पास कुछ था नहीं करने को, and then he said, yes, we have to do it, and there is no one who can stop us. So in 1991, when Mr. Singh became the finance minister, India was on the brink of bankruptcy. It was P.V. Narasimha Rao's government at that time. So, and we were at the brink of bankruptcy, just like you can see Sri Lanka is. Our situation was no less than Sri Lanka. Sri Lanka's present situation was like this. By 1994, when he presented his historic budget, the economy was well on its way to recovery. Unsettled the country from the bureaucratic control and license raj, because license raj से बहुत ज़्यादा corruption भी बढ़ चुका था. 70s, 80s, 90s are the days when India had a lot of problem of corruption. Nearly 1 crore new jobs were created. लेकिन हमारे liberalization से ये फायदा हुआ कि 1 crore jobs create हुए, and as I told you, everything was scattered because of information technology, and service sector boom kiya. Or that was the time, private sector, we saw that people were getting very high salaries, and those time,
people who were in government sectors were not getting good salaries, and there was a lot of disparity between private and government sector. Now, post 91 हमारा क्या सिनेरियो बना? हमारा सिनेरियो बना कि वी ओपनड इकोनॉमी टू ऑल. हम इंटर बॉर्डर ट्रेड स्टार्ट कर दिए. ट्रेड बॉर्डर्स वर ओपन. रेशनलाइजेशन ऑफ टैक्स रिजीम. यस, टैक्स का रेशनलाइजेशन हुआ. ये सब हम लोग बाद के क्लासेस में पढ़ेंगे. टैक्सेशन रिफॉर्म्स, बैंकिंग रिफॉर्म्स, अदर टाइप्स ऑफ रिफॉर्म्स. Reduction in control from center and removal of barriers to industrialization. So, during 1991, we witnessed 4 types of changes: structural reform initiative, physical reform, infrastructure reform, capital and. तो इतने तरह के रिफॉर्म्स हमने 1990 में कैटर किए, और ये हर रिफॉर्म को अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ हमको देखने को मिलेगा. And there are number of queries if you generate from it, then it can give you a number of researchable issues. इंडस्ट्रियल डीरेगुलेशन हुआ था, ट्रेड इन्वेस्टमेंट हुआ था, फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म हुआ था, फिजिकल फॉर्म में. नाउ लेट अस स्टार्ट विद बिफोर 1991 इंडस्ट्रियल डीरेगुलेशन में क्या हुआ? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर ऑल कमोडिटीज. यहाँ पे लाइसेंस रिस्ट्रिक्टेड टू अल्कोहल, ड्रग एसेट्रा. और आज भी हम देख रहे हैं अल्कोहल में रिस्ट्रिक्शंस हैं. प्राइवेट सेक्टर नॉट अलाउड इन मैनी इंडस्ट्रीज. आज तो प्राइवेटाइजेशन का टाइम है. यू सी प्राइवेटाइजेशन इन एजुकेशन सेक्टर. सारे सेक्टर्स को छोड़ दो, सबसे ज्यादा प्राइवेटाइजेशन तो एजुकेशन सेक्टर में हुआ. इतना मशरूमिंग ऑफ सो मेनी प्राइवेट कॉलेजेस, मैनेजमेंट कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, कि नाउ यूजीसी इज क्लोजिंग दीज कॉलेजेस. इतना ज्यादा ओवर प्राइवेटाइजेशन हो गया. इसी तरह अगर देखा जाए तो इसमें रियल एस्टेट में इतना ज्यादा प्राइवेटाइजेशन हुआ है, इतने ज्यादा बिल्डर्स आ गए हैं, इतने ज्यादा मकान बना दिए गए हैं कि एटलीस्ट इन लखनऊ आई कैन से यू दैट देयर आर मोर हाउसेस देन द पीपल टू टेक इट. तो प्राइवेट सेक्टर एक समय था जो प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट अलाउड इन मैनी इंडस्ट्री, और आज का टाइम है कि कोई छूटा नहीं है. इवन नाउ वी आर ब्रेविंग प्राइवेटाइजेशन इन डिफेंस, एनर्जी, रेलवे. ये स्लाइड तो 1991 के बाद की तस्वीर को दिखा रही है, बट अगर इसी के साथ हम एक और तस्वीर लगा दें आज की, दैट इज 2021 की. 22 में हम आ गए, बट अगर 2021 तक की भी बात हम करें तो हमारे ड्रग्स वगैरह से भी रिस्ट्रिक्शंस हटे हैं. डिफेंस में हम प्राइवेटाइजेशन ला रहे हैं, एनर्जी में ला रहे हैं, रेलवे, वी हैव सीन प्राइवेटाइजेशन इन रेलवे. तो जब इतना ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो यू हैव नंबर ऑफ थिंग्स टू, यू कैन सिंपली वर्क ऑन एफिशिएंसी मैनेजमेंट इन प्राइवेट वर्क in public sector of maybe Indian Railway, maybe metros are coming, they are again nothing but the privatized sector. So those are the things you can talk of. कंट्रोल ऑन प्राइस फिक्सेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. कितने सारे हमारे नेशनल हाईवेज आ रहे हैं, आप टॉल दीजिए, हाईवे यूज करिए, नो बर्डन ऑन गवर्नमेंट. कंट्रोल ऑन प्राइस फिक्सेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, market allowed to determine price, and that this is one thing, deregulation of prices बहुत फर्क पड़ा है, but market is very highly competitive. तो जब there are number of players, as you know, competitive market के क्या effects होते हैं, तो प्राइस को खुला मार्केट में छोड़ने के बाद भी if market is competitive, it won't affect much unless and until it is a monopolistic market. Now, financial sector reform. हम 1990 के reforms पे इसलिए ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि that was a landmark reform of India. उसके बाद के रिफॉर्म्स के बारे में भी हम वन बाय वन बात करेंगे, पर उस समय की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस समय के सिनेरियो को अगर हम नहीं समझेंगे तो हम आज की बात नहीं कर सकते. Now, RBI, a regulator, operation of bank and other institution under strict scrutiny. RBI का भी रोल तब से अब तक बहुत बदल चुका है. It has become more a facilitator and other thing. Closed economy से we move to open economy. हम खुद भी दूसरी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरे इन्वेस्टर्स हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं.
वॉलमार्ट से लेके कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो हमारे इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रही हैं. RBI, a facilitator. I told you now RBI is advisor facilitator for number of decision making. Physical policy में फिर direct tax rates high income tax evasion of payment, moderate income tax saving encourage corporate tax lower. हाई कॉर्पोरेट टैक्स, इसके बाद में कॉर्पोरेट टैक्स कम किया. फिर इंट्रोडक्शन ऑफ वैट आया. आज हम बात कर रहे हैं जीएसटी की. उस समय डिसऑर्गेनाइज इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे. डिसऑर्गेनाइज इनडायरेक्ट टैक्स के बाद हम वैल्यू एडेड टैक्स में आए. फिर हम सर्विस टैक्स देने लगे. और आज की डेट में वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ सिंगल टैक्स रेजिम, दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स टुगेदर. और बहुत जल्दी वी कैन मूव टू सिंगल टैक्सेशन सिस्टम. कॉम्प्लेक्स टैक्स प्रोसीजर, अभी तो टैक्स के प्रोसीजर बहुत डिफरेंट और अलग हो गए हैं. ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, quantitative restrictions on import and export. Pre-1991 we had lot of restrictions on import as well as export, but when we have moved towards free market economy, then these restrictions were removed. Lower tariff rates, free inflow of goods and out, lack of investment, inefficient local industries without global technological input, investment falls along. और इसी स्लाइड के साथ मैं एक अच्छी खबर आपको दे सकती हूँ कि इस बार का जब बजट पेश हुआ तो पता चला कि हम एक्सपोर्ट में काफी इम्प्रूव किए हैं. सो दिस इज अ गुड सिंबल फॉर अस. Maybe we like in UP we are having OPOD, that is one product one district. उसी तरह से मैं हम लोग नेशनल स्कीम बना रहे हैं, वन सिटी वन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, और वन district one product, maybe like that. Achievements of economic reforms in India. When 1991 reforms were brought into picture, then lot of benefits were also of that reform. It is not that everything comes with a loss only. Yeah, कुछ उसके negative repercussions भी थे, but yes, there were positive repercussions of that. Increase in national product. फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा, और आज भी हम उसको बढ़ाने के लिए एफडीआई इसमें इतना, उसमें उतना, इसमें उतना, हम लगातार इंक्रीज करते जा रहे हैं. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमारा बढ़ा. फॉरेन करेंसी रिजर्व, यस, आज की डेट में 1921-22 इवन आफ्टर पेंडेमिक आवर फॉरेन रिजर्व्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. फिस्कल डेफिसिट हमारा कम कर रहे थे, but pandemic has created lot of problem. Government has revised it to 6.8% and trying to keep it below 4 as it was their goal. Let's see, with pandemic still ongoing, it is not still over. So let's see how we can work with the fiscal deficit at present. Imports were discouraged. Even today we are discouraging import and trying to encourage export, but yes, imports of everything was allowed. Most of the things are allowed. Deregulation of interest rate, yes, now interest rates are fluctuating presently, तो हम पेट्रोल प्राइस भी हमारे फ्लक्चुएट करते हैं. और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया क्योंकि prices were rocket high in 1990. Today we say that prices are high, but वो टाइम भी था जब prices were rocket high. Negative effect of reforms. As I told you, these reforms, we had to pay a big price for this reform. It is not like that कि हमें price नहीं pay करना पड़ा, हमें price pay करना पड़ा. Negative effects are from national sovereignty at stake led to commercial and political colonialism. Yes, you have to pay the price. Transfer of natural resources, हमें बहुत कुछ देना पड़ा था. Widening gap, आज भी ऑक्सफैम की जो 2 साल पहले रिपोर्ट आई है, पिछले साल जो रिपोर्ट आई है, कंटिन्यूसली रिपोर्ट्स आने में दिख रहा है कि रिच आर बिकमिंग मोर रिच एंड पुअर बिकमिंग मोर पुअर, द डिवाइड इज इंक्रीजिंग. और पेंडेमिक जैसी चीज में व्हेन पीपल वर आउट ऑफ जॉब, अनएम्प्लॉयमेंट हाई था, लेबर घर पे बैठा था, उस समय स्टॉक एक्सचेंज वाज बूमिंग. नाउ दिस इज द थिंग व्हिच यू कैन think of research, that in a socialist country how you are moving toward capitalist orientation. ये एक बहुत बड़ी समस्या है. हम इकोनॉमिक्स के लिए तो है ही कि इनइक्वालिटी बढ़ रही है, और इसीलिए इस बार बजट में इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हुई है कहीं ना कहीं.
डिक्लाइन डिमांड फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ, ग्लोबलाइजेशन आने से डोमेस्टिक प्रोडक्ट के पे इफेक्ट पड़ता है, पड़ भी रहा है, क्योंकि चाइना कैप्चर्ड द मार्केट वर्ल्ड ओवर। अपनी लो कॉस्ट प्रोडक्ट से उसने वर्ल्ड को इतना बना लिया है कि आज जब पेंडेमिक में वी वर अगेंस्ट चाइना, और रादर द ग्लोब वाज अगेंस्ट चाइना, बट द most of the countries were dependent on most of the items from China, and that was the reason कि full sanctions आप चाइना पे नहीं लगा पाए। जहां आप लगा सकते थे आपने कोशिश की, but yes, China is coming up with these low cost products which other countries are not able to compete with. And made in China slogan is what Narendra Modi tried to promote, make in India, but that we could not we could not succeed in doing so. Failed to obey the labor laws. Yes, labor laws again and again they get changes. Social inequality, I told you, is rising. Farmer suicide, that time when these reform came, आज इतना हल्ला हो रहा है नया फार्मा बिल आने पे कि ये हुआ वो हुआ, पर जब 1990 की रिफॉर्म्स आई थी उस समय भी 7 किसान मरे थे। ये तो न्यूज है, बट देयर वाज एम्पल मोर देन दैट, क्योंकि डंकल प्रपोजल आया था और डंकल प्रपोजल को एक्सेप्ट फार्मर नहीं कर रहे थे। Kills the domestic business. Yes, there is a lot of tough competition individual investors are facing in India because we have low capital, whereas the other countries, the people coming and investing in our country are rich in capital. Now, after this, what is the road ahead? The Asian, then came, I'm giving you a bit of global perspective because that also helped in bringing out more, reforms in India. The Asian physical crisis of 1997-99 laid India low. ये एशियन क्राइसिस थी जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे नेशंस में डिप्रेशन आया था, बट इंडिया कुड रेजिस्ट टू सम एक्सटेंट because we were more dependent on public sector rather than private sector. उसके बाद 2 बुरे ड्राउट आए थे 2000 और 2002 में। Then 2001 सब प्राइम क्राइसिस, सबको पता है कितना बुरा सब प्राइम क्राइसिस आया था, and the whole world moved into uncertainty. 2012, no, सब प्राइम क्राइसिस was in 2012. This was a dot-com crisis, and that was also a global uncertainty. And then there was invasion of Iraq, which led to oil crisis. Indian economy was shattering. GDP growth slowed to 5.7%, but later on it peaked. But there is global boom in China emerged as a winner, and both India and China's GDP started growing. India's GDP growth soared to about 9% in 2005 to 2008. This was the peak of India's GDP, in 2005 to 2008. And now I have given you a very picture of India's GDP since independence, rather 60s. You can see this was the behavior in 60, but in 80, then 90, this is the point from where we started raising. And there was a time when we went to 9. The growth was as high as 9. And later on, the growth was slipped by 7 point. Because of pandemic, we have a negative growth. So in history, we have thrice the negative growth. You can study for your own. When are those periods when we had negative growth, when we have very, very low growth? These are the periods of low growth. And yes, after pandemic, there was a sudden problem. The Asian giant's gross domestic product has contracted by 7.3% in 2021. दुनिया की हर इकोनॉमी में श्रिंकेज था, so India was not an exception for it. हर जगह ये हुआ है। तो हमारे जो ग्लोबल क्राइसिस हैं, इन्होंने इस चीज की प्रॉब्लम, हम लोग ने प्रॉब्लम फेस की। तो इंडियाज जीडीपी ग्रोथ हैज ऑलरेडी बीन स्लोइंग डाउन फॉर नियरली हाफ अ डिकेड। तो पेंडेमिक से पहले ही हमारी जीडीपी
गिर रही थी, क्योंकि we had again had two structural reforms like demonetization and GST, we will talk about later. और पेंडेमिक ने और ज्यादा मुश्किल कर दी, और we are really struggling to move out of it. The unexpected onset of COVID-19 pandemic compounded the stress on the economy with lockdowns and limitation of movement to drag the economy into the red, something that happened since 1979. See, 1979 may we had a negative growth. Now, you had GDP in 1979. Now, the economic outlook remains highly uncertain, and periodic material revision to our growth forecast. Every day we say that IMF has revised the estimate, Moody has revised the rating, and other things. Just, this is the time of uncertainty. And no one can concretely say, कभी लगता है GDP बढ़ेगा, कभी लगता है नहीं बढ़ेगा. We were moving very smoothly, and then the third wave came. We were so astonished that we thought that it will be a major mishap, but thank God that it passed on very silently. Aditi Nair, the chief economist and ICRA, said in a statement, at present we expect real GDP to expand in the range of 8 to 9.5% in financial year 2022. So let's hope for best. Now, as we know that India was the world's fastest growing major economy, surpassing China before pandemic. But this slowed down. There were economic shocks of 2008, 2009, 10, 11, 12 में हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही थी. And after that, in 2014, the new government took over. And we had 2016, we had a very bad shock of demonetization. And then there was another shock immediately after 1 year, that was GST. So the economy has to absorb these two shocks, because of which the GDP was not performing well. You can see from this slide that there are shocks which it is trying to overcome. Now, policies for economic development. When we are talking of economic reforms, then obviously economic reforms are nothing but the policies. So somewhere we have to talk about policies, that what policies lead to reform. One are macroeconomic stability policy. हमारे इस बार के बजट में बहुत सारी चीजें आई हैं रिफॉर्म्स के लिए. मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में है कि हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट बना रहे, पर कैपिटा इनकम बढ़े, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो. देन वी हैव प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि अब बैंक्स भी प्राइवेटाइज होंगी. सिक यूनिट्स को बंद किया जा रहा है, सिक यूनिट्स को बेचा जा रहा है. Recent example is Air India. It has been given back to Tata because it was a sick unit जो गवर्नमेंट रख नहीं पा रही थी. So these are the policies which are leading to reforms. Foreign aid, yes, we are increasing FDI. We are encouraging FDI, not even increasing the limits of FDI in number of sector, but rather we are encouraging FDI. Effective tax collection, yes, this is one good news. अगर हम presently देखें तो from 4% the taxpayer came up to 6.4%, जबकि इसमें 50% ऐसे हैं जो tax slab में rebated हैं. These are old gen people or people who doesn't come in this slab. But yes, effectiveness of tax has come up. GST, even if they are not paying GST, they have to take the GST number, and somehow, as we will reduce the rates of GST and all the slabs will be, we will try to merge like Singapore, they are paying flat 6% GST. Everyone is paying, maybe a small or maybe a big. So those type of things have come.
let's see what will be the scenario. So more transparency will come into picture. बिकॉज टैक्स कलेक्शन अगर नहीं होता तो इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हम लॉन्च ही नहीं कर सकते थे पेंडेमिक के समय. We have launched number of infrastructure projects. इतने सारे हाईवे कम अप हुए हैं. In UP only we can see from Purvanchal to this, that we have seen the most deprived part, that is Bundelkhand region, जिसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं. तो ये गवर्नमेंट पॉलिसीज पे ही डिपेंड करता है. डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, दिस इज द एरिया वेयर यू नो वी आर लैगिंग. हम अभी भी बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज सेटअप नहीं कर रहे हैं. स्पेशली वी कैन गो फॉर डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, जैसे बुंदेलखंड एरिया है यूपी में, उड़ीसा है इंडिया में. ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे लैंड बहुत है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, और जहाँ पे एग्रीकल्चर इज नॉट द मेजर थिंग. जहाँ पे बंजर भूमि है वहां पे हम हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, वी कैन ऑप्ट फॉर नेहरूवन मॉडल. We can promote heavy industrialization, because that will, one hand, give boost to manufacturing, secondly it will boost employment, and thirdly it will make India developed. Investment in public services, so that we have to see. So अगर हम पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा को देखें तो उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं फोर्थ जनरेशन परफॉर्मेंस, फोर्थ जनरेशन ग्रोथ में. Under Narasimha Rao, the first generation reforms can be termed as industrial policy reforms, which also dealt with export licensing and import norm. अभी हमने बहुत सारा उस समय में जो reforms हुए थे, physical reforms, industrial reforms, monetary reforms, सब पढ़े. Now that carried forward, and then we had a small era of second generation reform from 1999 and till 2004. That was when Vajpayee government came into. That time also highway projects were the one which reformed economy of the country. It boosted iron, it bought out of recession cement and iron and steel industry on one hand, generated employment on another hand, boosted purchasing power of the people, as well as it boosted demand. And this was the era that new telecom policy of 1999 was launched. So India, the spectrum was, we are now going to be auctioning 5G. From 4G, we are moving towards 5G auctioning. So that was the time when, this was initiated. Third generation reform was, there is a very sluggish period after 2004 to 2014. It was a time when Manmohan Singh was heading the government. Basically, much was done, and there were a number of things I would like to focus on, because this was a period which was very sluggish period, and there were a number of things. There were a number of things which were creating problems, and sorry, there was a call. And that era, we were having inflation, we were having resistance from public. There were no growth aspects seen, though GDP was increasing, but there were no major reform took place as such. It was a silent era, we can say. And then then in 2014, when Prime Minister Modi took over, then we had a third generation of reforms, which were demonetization and GST. So in his first term of regime, he came up drastically. Just a minute. Yes, sir.
Just sir, give me half an hour, 15-20 minutes, and I'll be back. हाँ कोई नहीं. Yeah. Just after 15 minutes, I'll be. Okay. Bye. So Modi's third generation of reforms can be termed as fulfilling of basic need reforms. Now, when Modi government took over, they wanted India to be a more transparent India, corruption-free India, and it should be a developed India to be visible on world canvas. And to some extent, they are successful in it. Now, the basic two major reforms, and both were associated with economy, were demonetization and GST. If I talk about demonetization, everyone can. Let me now stop here and listen your views about demonetization. What you think was demonetization? Can anyone would like to throw some light on this major reform? What you perceive as a researcher? Miss Neha? Miss Neha? Yes, ma'am. Yes. Ma'am, the very few thing I know about demonetization is the ma'am corruption से मनी को बाहर निकालने के लिए I think this is one of the way जो कि अभी हम लोग ने रिसेंटली 2 years बैक देखा. मैम अभी तो मुझे इतना ही इसके बारे में पता है. ब्लैक मनी को कम करने के लिए Yes. हम इसे अडॉप्ट The करते हैं. objective was this, but it was defeated. क्योंकि Yes, ma'am. It 3% was of not perfectly. हाँ, because every the money, only 3% of money left unaccounted. Otherwise, everything was notable. Anything else you could say that what were the what were the consequence of this reform? Ma'am, I think Yeah. मैम मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस तो नहीं इसके दिखे, बट नेगेटिव इम्पैक्ट ही ज़्यादा दिखे. मुझे आई थिंक लोगों को काफ़ी ट्रबल हुआ, ये एक तरह से मैं बोल सकती हूँ. बाकी पॉजिटिव इम्पैक्ट तो मुझे इतना नहीं दिखा मैम इस रिफॉर्म का. Anyone else would like to say something? Hmm? मैम मुझे तो नेगेटिव ही लगा क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट था वो डेवलप्ड इकोनॉमी से रिलेटेड है कि मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था. और हमारी इकोनॉमी जो है वो एक डेवलपिंग इकोनॉमी है. हमारे में जो है 90% सेक्टर जो आता है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है. ऑलरेडी हमें ये सारी चीज़ें पता थी. स्टिल तो लोगों के पास जब बैंक अकाउंट नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उनके पास कोई सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी नहीं है उनकी इनकम में, तो ब्लैक के पास होगी कि हम लोगों को पता है. इसी वजह से जो ब्लैक मनी का कॉन्सेप्ट था वो पूरी तरह से फेल हुआ हमारी इंडिया में, क्योंकि वो हमारे लिए बना ही नहीं था. और प्लस 95% जो ब्लैक मनी थी फिर से हमारी इकोनॉमी में रिटर्न हो गई थी इसी वजह से. ये ऑलरेडी एक फेल प्लान था. सिर्फ मुझे नहीं लगता, क्योंकि मतलब जो है इस तरह की कोई भी चीज़ें हम लोगों को अडॉप्ट करनी चाहिए. पहले हमें अपनी देखनी चाहिए प्लान जो था, मतलब पहले से ही पता है कि ये चीज़ें होती हैं. अगर हमने डीमोनेटाइजेशन को अप्लाई किया है तो फिर हमने जो है हेलीकॉप्टर और रिवर मनी को क्यों नहीं अप्लाई किया इसमें कोविड के केसेज में. ये भी मेरा पॉइंट है. और कुछ? यस, कोई और कुछ कहना चाहेगा? Anyone else would like to speak on this? मजा नहीं आ रहा है आप लोगों को क्लास में? आप लोग मैम हाँ? मैम after demonetization we tried to digitalize economy. यस. देखो, हर चीज का तुरंत इफेक्ट नहीं होता है, पहली चीज. Yes ma'am. और कुछ हिडन इफेक्ट्स होते हैं. Yes जैसे ma'am.
एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ. इट इज बेटर टू इंटरेक्ट, इंटरेक्शन से बहुत चीज है. छोटा, गवर्नमेंट ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी को वर्चुअल एसेट 30% पे हम टैक्स करेंगे. दिस इज द डायरेक्ट स्टेटमेंट गिवन बाय द गवर्नमेंट, इजंट इट? Yes, ma'am. लेकिन हिडन एजेंडा क्या था कि इट रिकॉग्नाइजेज इट एज अ करेंसी, वर्चुअल करेंसी. हम टैक्स तभी करेंगे ना जब उसको रिकॉग्नाइज करेंगे. Yes, ma'am. तो जो उसका भविष्य डाइसी था वो हमें दिख गया ना. तो इसी तरह डिमोनेटाइजेशन के बहुत से हिडन फायदे थे. एक चीज, सारा मनी सर्कुलेशन में आ गया, विजिबल हो गया. आपके पास कितना पैसा है, मैं ये नहीं कहती उससे करप्शन बंद हो गया या ब्लैक मार्केटिंग बंद हो गई. एवरीथिंग इज मूविंग, बट टू सम एक्सटेंट लोगों के अंदर डर है कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. There is transparency now. Better, at least to some extent. That is what I'm saying. पहले क्या होता था, like I have worked in lot of developmental projects. हम लोग एक बार वर्क फॉर फूड प्रोग्राम के लिए गए थे फील्ड पे, जहाँ पे that time I think it was in 2006 or 7, एंड वहां पे कॉन्ट्रैक्टर काम करवा रहा था लोगों को. वो जितना कॉन्ट्रैक्ट में होता था उसका आधा पैसा देता था, और खाना जो दिया जाता था वो भी लिमिटेड दे रहा था. लेकिन नो वन वाज स्पीकिंग. क्यों? क्योंकि उनको पता था अगर आज हम बोल दिए तो हम लोग की टीम तो चली जाएगी एक दिन में, उन्हें रोज वहां काम मिलना बंद हो जाएगा. आज की तारीख में क्या हो रहा है, आज अगर हम बेनिफिशियरी को 10 रुपए दे रहे हैं तो वो डायरेक्ट उसके अकाउंट में जा रहा है. हाँ, उसमें से फिर वो 10 पैसा निकाल के आज भी सरपंच को दे रहा है. इट इज नॉट देयर. 80,000 अगर प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम में अगर बेनिफिशियरी को जा रहा है तो उसमें से 10,000 प्रधान लेता ही है, कभी कभी 20,000 भी ले रहा है, लेकिन 60,000 बेनिफिशियरी के पास जा रहा है. पहले क्या होता था, गवर्नमेंट ने कहा 80,000 देंगे, मिडिल मैन सब खा जाते थे, एंड फाइनल बेनिफिशियरी को 10,000 भी नहीं मिलता था. इजंट इट? Yes, ma'am. That is one change. Secondly, most of the transaction can be traced back because they are online. बहुत सी चीजों में हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं ऑफलाइन. ये सब इफेक्ट है डिमोनेटाइजेशन के पॉजिटिव, कि आज का आपको एक मकान भी खरीदना है तो आज आप ऑफलाइन नहीं खरीद सकते, जो कि पहले होता था कि हमने 50% कैश दे दिया, 50% काइंड दे दिया और मकान हमारा हो गया. आज कम से कम जो उसका वैल्यूएशन है, एग्जैक्ट अमाउंट आपको तो वाइट में ही देना पड़ेगा. हाँ जी. अगर उसका वैल्यूएशन 75 लाख है तो उतना तो आपको वाइट देना पड़ेगा. अब जब ये 75 लाख आपने वाइट में दिया और आज से 5 साल बाद जब वो 1 करोड़ हो गया, बेचा तो वाइट में ही बेचा, एंड देन यू विल पे 40% ऑफ द टैक्स. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. Getting. तो डिमोनेटाइजेशन से लॉन्ग टर्म ये हुआ है कि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आई है. शॉर्ट टर्म में नहीं दिखी, पर लॉन्ग टर्म में दिख रही है, क्योंकि आज आपका सारा पैसा जब अकाउंट फॉर हो गया है, अब आप उसको खर्च भी, आप 50,000 से ऊपर लगा रहे हो तो आपको पैन लगाना पड़ रहा है. आप 2 लाख का ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपको पैन लगाना पड़ रहा है. आपने सारा मनी ब्लैक का व्हाइट तो कर लिया, बट आप उसको ट्रांजेक्शन में लाने के लिए तो आपको व्हाइट करना पड़ रहा है. So that is the power of demonetization. And then some GST. अगर हम GST की बात करें तो GST was the much needed and awaited tax system. It is not that this is proposed by Prime Minister Narendra Modi's government. Way back it was proposed by Manmohan Singh government only. But somehow, because there was not consensus on GST, so it could not do it. And when this government came into picture, it was having a clear majority and it could implement it. Though, yes, there was a lot of problem while implementation. It implemented in haste. बहुत जल्दबाजी में इन्होंने implement किया, क्योंकि कोई भी पॉलिसी आप एकदम से अगर ले आते हो उसका प्रोज और कॉस्ट सोचे बिना तो दिक्कत होती है. आम गवर्नमेंट जनता को दिक्कत हुई. It was not tax savvy.
उसको फाइल करना नहीं आता था। आज भी बहुत से लोग हैं जो अपना इनकम टैक्स खुद नहीं फाइल कर पाते हैं। आज भी बहुत से लोग हैं जो अपना जीएसटी खुद नहीं फाइल कर पाते हैं। दे हैव टू टेक द सर्विसेज ऑफ सीएस। तो और उसके बाद इसके 2 महीने में 200 नोटिफिकेशन आए जीएसटी के, जो गलत था। कोई भी जब आप पॉलिसी लॉन्च करें तो आपको इतना पुख्ता होना चाहिए कि इस तरह के हेजल्स नहीं आने चाहिए उसमें। लेकिन जीएसटी वाज द मच नीडेड, एंड धीरे धीरे इसमें इतने चेंजेस आएंगे। अ डे विल कम व्हेन वी विल सी लॉट मेनी चेंजेस इन जीएसटी, एंड इट इज नॉट फार दैट वन डे वी may see that petrol and gas prices are in GST. There are major reason to bring it into GST gamut, क्योंकि पेट्रोल प्राइसिंग में बहुत बड़ी कॉस्ट हम वेरियस टैक्सेस के फॉर्म में दे देते हैं। So that is the third generation reform. And the fourth generation reform, which could be seen from the new budget which has been launched in 2022, it is nothing but a blueprint of India in another 25 years. So any government, whosoever comes, should at least keep this blueprint as a base so that India should prosper, not their vested interests, but the country. So the fourth generation reform talks about inclusive growth, talks about development, and we hope that the years to come should cater these things. So with that, I would like to end, and any questions or queries from your side, I am ready to answer. Any query from your side, I am ready to answer. कुछ भी पूछना है आप लोग बहुत आराम से पूछ सकते हैं। हाँ? मैम हम लोग जितने भी इकोनॉमिस्ट होते हैं, मैक्सिमम लोगों से हम लोग यही सुनते हैं, वो कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी होती है उसको क्रिटिसाइज करते हैं, बट स्टिल वी आर प्रमोटिंग कैपिटलाइजेशन को। मतलब ये किस तरह से है कि हम डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। दिस इज आयरनी। एक्चुअली ग्रोथ हमेशा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मिलेगी, ठीक है? तो बात तो ग्रोथ की जाती है। जब आप बात ग्रोथ की करोगे तो आप छोटा सा एग्जांपल देखो, ये डबल स्टैंडर्ड टॉक्स की जो बात होती है ना, दिस इज वेरी रॉन्ग। आप सिंपल एग्जांपल देखो, टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं हुआ। इसका सबसे ज्यादा प्रेशर किस पे पड़ा? द मिडिल इनकम टैक्स पेयर्स। रिच को नहीं पड़ा, पुअर को भी नहीं पड़ा। द मिडिल इनकम टैक्स पेयर्स और नॉट? यस मैम। सबसे ज्यादा मिडिल इनकम टैक्स पेयर हम और आपको पड़ा। I had a TV program of just after the budget analysis, but the people who are speaking for it are the ones who are least affected by it. Those who doesn't know how it is calculated also. हाँ, टैक्स नहीं कम किया, टैक्स नहीं किया, बजट बहुत खराब है, टैक्स नहीं किया। How many of you are paying tax? 125 करोड़ इंडियंस है। आउट ऑफ दैट अगर 5 की एवरेज फैमिली मानो तो वी हैव 25 करोड़ फैमिलीज। आउट ऑफ 25 करोड़ फैमिलीज ओनली 6.4 करोड़ फैमिलीज आर गिविंग टैक्स। बाकी तो हमारे ऊपर पल ही रहे हो ना, जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर। अब इस 6.4 में भी आपके पेंशनर्स निकल गए, एंड पीपल हु आर जो 5 लाख तक जिनकी एनुअल इनकम है, 5 या 6 लाख तक एनुअल इनकम वाले लगभग टैक्स नहीं के बराबर देते हैं। तो आपको क्या लगता है 2-3 करोड़ फैमिलीज ही देती है ना टैक्स? तो कितनी जनता इफेक्ट हुई इससे? लिटरली देखो तो इसकी इकोनॉमिक्स अगर निकालो तो कितनी जनता इफेक्ट हुई? A handful of people? और कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी हैंडफुल ऑफ पीपल के लिए बनती है? नहीं बनती है। इसका क्वेश्चन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सरकार को पैसा चाहिए, पैंडेमिक में पैसा नहीं है, अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट नहीं करेगी तो कैसे जिएगी?
इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए उसको प्राइवेट प्लेयर्स का सहारा लेना है। प्राइवेट का लेना है तो आप अल्टीमेटली कैपिटलिस्ट की बात ही कर रहे हो। अगर आप बीजेपी गवर्नमेंट करा दोगे, कांग्रेस आएगी वो भी यही करेगी, कोई भी गवर्नमेंट आएगी करेगी यही, क्योंकि देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर इट। एग्रीकल्चर से आप किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करा नहीं सकते। करा सकते हैं एग्रीकल्चर को बूस्ट करके? नो मैम। तो व्हाई जस्ट फॉर सेक ऑफ क्रिटिसाइजिंग वी आर क्रिटिसाइजिंग? वी आर नॉट थिंकिंग इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। हर आदमी बढ़ना चाहता है, हम और आप भी बढ़ना चाहते हैं। हम तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, हमारी तो एफिशिएंसी बहुत हाई है। पब्लिक सेक्टर में हम देखते हैं टीचर्स आती हैं चली जाती है, पढ़ाती भी नहीं है। तो हमें गवर्नेंस बढ़ाना चाहिए, चाहे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो चाहे सोशलिस्ट इकोनॉमी। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सिस्टम में और गवर्नेंस होना चाहिए। आप डेवलप करोगे और जरूर करोगे। एनी मोर क्वेरी? मैम क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है कि मतलब इसको भी सबने इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया क्योंकि ये वर्चुअल करेंसी है, और थोड़े दिन बाद आरबीआई जब लॉन्च करेगी तो यही लोग होंगे, देखना, ऊपर बैठे हुए जो खरीद भी लेंगे। तो मैम आपके मतलब क्या ओपिनियन है, मतलब सही है देखो ये? बेटा, आने वाले समय के साथ सबको बदलना। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? ब्लैक मनी। स्टॉक एक्सचेंज में क्या व्हाइट मनी लगती है? नो मैम, सारी ब्लैक मनी रहती है उसमें। तो आरबीआई, ये वर्चुअल करेंसी क्या है? सारी ब्लैक मनी। यस मैम, कोई ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है इसमें। बस यहीं पे गवर्नेंस लाने की बात हो रही है। आरबीआई जब डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा तो वो गवर्नेंस के साथ लॉन्च करेगा, और जैसे ही इसमें इन एंड आउट पता चल जाएगा किसका पैसा किसको गया, वही इट विल नॉट बी वेरी लक्रेटिव। वो सेकंड स्टॉक एक्सचेंज ही रह जाएगा। समझ रही हो? यस It will मैम, be a यस। parallel moving black, accounted black economy. You agree with me or not? यस मैम। यस। और बेटा किसी को कुछ पूछना है तो? इकोनॉमिक्स तो इतना अच्छा सब्जेक्ट है। नेक्स्ट डे अपनी अपनी जिस एरिया में आप लोग रिसर्च करना चाहते हो ना, आप लोग ने कोई टाइटल डिसाइड किया होगा ना, टॉपिक, एरिया, कि नहीं डिसाइड किया अभी? यस मैम, डिसाइड किया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा वो भी डिस्कस करेंगे, ताकि मैं जो पढ़ाऊं तो आप लोगों की चीजों से लिंक करती जाऊं। मैम थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा डिस्कस करिएगा क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन है। अरे तो बहुत सारा डिस्कस करो ना, बोलो तुम लोग ना, क्लास में बोलोगे नहीं, वन साइड क्लास नहीं चलती है। आई वॉन्ट इंटरेक्टिव क्लास फ्रॉम यू ऑल। तुम लोग ओके कुछ मैम। बोलोगे तो मैं जरूर जवाब दूंगी, तुम लोग यस पूछोगे मैम, तो क्या मजा आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग को रिसर्च से रिलेटेड थोड़ा सा गाइड कर मैं दीजिएगा, तो हम लोग को किस स्टैटिस्टिक्स, तरह। आरएम, टेक्निक्स, मॉडलिंग सब कुछ करती हूँ रिसर्च में। यू कैन गो टू गूगल स्कॉलर, रीड माई पेपर्स। अल्पना श्रीवास्तव। ओके, रिसर्च यस गेट मैम। में मिल जाएंगे, सब जगह मिल जाएंगे, ठीक है? ओके मैम। ओके Any help you all can seek from me. So any query today, then tell me, or else I should wind up. मैम। मैम रहता है वो ऑफ द टाइम। हाँ, मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि मतलब ग्रोथ अगर हमें करनी है तो हम जो है मतलब कैपिटलिस्ट को ध्यान में रख करते हैं, देखो दोनों बट तरीके हमें सीखना पड़ेगा। कैपिटलिस्ट ग्रोथ की भी जरूरत है क्योंकि हमें ग्रोथ करनी है, लेकिन उसी के साथ जो कंट्री में 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो $3 अ डे, आपको इंक्लूसिव ग्रोथ की बात तो करनी पड़ेगी। सोशलिज्म तो लाना ही रखना ही पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, व्हाई वी आर प्रमोटिंग दीज थिंग्स? फॉर दिस पॉपुलेशन ओनली ना। यस मैम, यस मैम, यही चीज थी कि मतलब इतनी पॉपुलेशन हमारे पास अनएजुकेटेड भी है, इलिटरेट है, और ये सारी चीजें तो मतलब इस तरह से मतलब गैप होगा कि। जब एज अ इकोनॉमिस्ट आप बैठते हो ना चेयर पे, दिमाग घूम यस जाता है पॉलिसी बनाने में, क्योंकि पॉलिसी आपको बनानी है जिसमें आपको ध्यान रखना है 50% ऑफ पॉपुलेशन का,
और दूसरी तरफ आपको इंडिया को एक नए कैनवस पे रखना है, और इन दोनों का ब्रिज बनाने में हालत खराब हो जाती है. इट्स वेरी इजी टू क्रिटिसाइज एनीवन, बट इट इज वेरी टफ टू लीड दैट रोड. यस मैम, और एक इसी से रिलेटेड एक है क्वेश्चन कि शॉर्ट टाइम में हमें इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो नहीं दिखते हैं, तो जो शॉर्ट टाइम में हमें जो भी इम्बैलेंसेस फेस करना पड़ता है, जो भी सोसाइटी का मतलब बिहेवियर रहता है, तो इसका भी कोई एक आज का ग्रोथ रिफॉर्म पैटर्न और 1991 के रिफॉर्म पैटर्न में कोई डिफरेंस है? चलो नेक्स्ट टास्क यही है कि 1991 में जैसे रिफॉर्म्स की बात की गई थी, क्या आज हम उस रिफॉर्म से अलग जा रहे हैं? ये मंथन करके आना, हम लोग इस पे भी डिस्कस करेंगे. ठीक है? जी. ओके, Okay, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू वेरी मच. हाँ शिवानी.